हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के. So let's start. The first most important question: what is the importance of DNA copying in reproduction? So DNA copying की क्या importance है reproduction में? DNA copying जो है ये बहुत ही essential process है जो ensure करती है कि reproduction से जो नए cells बनते हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जाए. ऐसा ना हो कि एक सेल में कम डीएनए दूसरे सेल में ज़्यादा, जैसे गैमीट्स फॉर्म होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. तो जब वेरियस स्पर्म्स बनते हैं तो सभी स्पर्म्स में जो जेनेटिक मटेरियल जाता है वो इक्वल अमाउंट जाता है. अगर कम ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो क्या होगा? कुछ स्पर्म्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ स्पर्म्स के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी. तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या वो एक्जैक्टली कंप्लीट ह्यूमन बन पाएगा? नहीं. सो डीएनए कॉपिंग सबसे ज़्यादा बेसिक और असेंशियल प्रोसेस है क्योंकि जब ये रिप्रोडक्शन होता है नए सेल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल, एंड जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं तब उनमें पेरेंट सेल में मौजूद जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होना ज़रूरी है. क्लियर? सो हाउ विल वी राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन? वी विल राइट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को भी कॉपी डाउन करना चाहिए. सो विल राइट the importance of DNA copying in reproduction is that replication. अब डीएनए कॉपिंग जो उसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कहा जाता है. इज दैट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंश्योर दैट द डॉटर cells formed as a result of cell division receive equal amount of genetic material. जो डॉटर सेल है वो रिसीव क्या करे? इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. So what is the importance of DNA copying? The importance of DNA copying in reproduction is that replication जो होता है of DNA का, यानी जो copying होती है of DNA की, ये ensure करता है कि जो daughter cells form हुए हैं as a result of cell division receive करें equal amount of genetic material. Clear? So उन्हें parent organism जैसे ही equal amount of genetic material पहुंचना चाहिए. I hope so a question and the way you have to write this question is clear to all of you. Yes? Now we'll move on to the next. That's the second most important question. This question is clear. We'll move on to the second important question. The second most important question is that how do Hydra reproduce? Is this method sexual or asexual mode of reproduction? ये हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस? हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. खाली इतना लिखकर नहीं छोड़ेंगे, वी हैव टू राइट अबाउट इट. यूजुअली इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है. सो अपन कैसे लिखेंगे? हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, दैट इज द प्रोसेस इन विच अ बड अराइजेस ऑन द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी पर क्या फॉर्म हो जाती है? एक बड फॉर्म होती है विच मैच्योर्स टू फॉर्म अ न्यू organism. This method of reproduction is what?
एसेक्सुअल क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये मेथड क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. सिंपली अपन ये नहीं लिखेंगे कि हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इतना छोटा सा आंसर लिख लेंगे. आंसर लिखना डिपेंड करता है whether it's a 3 mark or a 2 mark question. अगर it's a 2 mark question, simply write only this much. Hydra reproduces by budding and it is an asexual mode of reproduction. But if it is a 3 mark question, you need to properly write the answers with proper key terms. ऐसा unnecessarily भी हर कुछ नहीं लिखेंगे. Specifically, we'll write which all points are important. And let's see the way we should write this answer. Hydra reproduces by budding. That is the method in which a bud or outgrowth appears on the parent body that matures to form a new organism. ये mature होते हैं क्या फॉर्म कर दिया? A new organism. नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर अपन लिखेंगे. दिस मेथड ऑफ reproduction is asexual. ये method of reproduction is asexual because only one parent is involved. Clear? तो इसमें अपन ने asexual reproduction को भी one line में describe कर दिया and we have written what is budding and just one line definition of budding. जिसमें क्या होता है? पेरेंट बॉडी पे बड यानी कि आउटग्रोथ अपीयर होती है जो मेच्योर होके क्या बनाती है? एक नया ऑर्गेनिज्म. कुछ इस तरीके से सपोज करो कि जैसे क्या है? एक पेरेंट हाइड्रा, अब इसके ऊपर एक बड अराइज हो जाएगी और ये बड क्या होगा? धीरे धीरे मेच्योर होके एक कंप्लीट हाइड्रा बनाएगी जो बाद में डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट विल लिव एज इंडिविजुअल. और क्योंकि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो क्या है? ये asexual reproduction. I hope so this is also clear to all of you. Now we'll move on to the third most important question. Now, the third most important question. What are testes? Write its functions. क्या बताने अपन को इसके functions? So what are testes? Testes क्या है? Testes are the male reproductive organ and testes के functions क्या है? One function is formation of sperms और दूसरा sperms क्या है? Male gamete है. और दूसरा फंक्शन क्या है? रिलीज ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो रिस्पॉन्सिबल है किसके? फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर? हाउ आर वी गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन? सो लेट्स राइट डाउन. टेस्टिस आर द मेन reproductive organ. ये मेल्स में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट्स फंक्शंस. द टू फंक्शंस ऑफ टेस्टिस आर, इस तरीके से अपन लिखेंगे. टू फंक्शंस ऑफ टेस्टिस आर. द फर्स्ट फंक्शन
First function, formation of sperms. This way we should write whenever it's asked. And the second function, release of hormone testosterone. So this is the way. जैसे अगर अपन को functions पूछेंगे तो अपन properly लिख रहे हैं. Testes are the male reproductive organ. इसके दो functions है. पहला function क्या है इसका? Formation of sperms. And दूसरा function क्या है? Release of hormone testosterone. आगे अगर हम इसे और further increase करना है, formation of sperms, that is the male gamete. इसका से क्या अपन कर सकते हैं increase? That is the male gamete. And आगे अपन लिख सकते हैं release of hormone testosterone, that is responsible for secondary sexual characters. Okay. That's responsible for what? Secondary sexual characters. Clear to all of you? I hope this question में किसी को भी कोई doubt नहीं है. Question number 3 is clear? Yes? So now, next we will move on to the fourth most important question. Let's drop this question now. The fourth most important question. What are the two major events that occur in sexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से दो मेजर इवेंट्स होते हैं, इनको हम वी आर टॉकिंग अबाउट. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. चाहे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में हो चाहे ह्यूमंस में हो, सबसे पहला काम क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स. सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या है? फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमीट्स फ्यूज होते हैं. That results in formation of a zygote. Clear? So these are the two major events that occurs in sexual reproduction. Let's write down. कभी लोगों को directly points नहीं लिखने चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए. सबसे पहले जैसे question लिखा, so we should copy it down. That is a way to represent. Like what are the two major events? So we will write the two major events that occur in sexual reproduction are as follows. This way we should write. After R, then we have to write point wise. First point, formation of gametes, that is the male and female gamete. ये क्या हो गया इसका? पहला step. And दूसरा, second we have to write down fertilization, that is fusion of male and female gamete. So दो click होगा आपकी. First step, formation of the gametes, that is the male and the female gamete. Second, fertilization, it's fusion of the male and the female gamete. This way we have to write answer to this question. Now, the fifth most important question. Let's move on. I hope this question is also clear. And अपन को कभी भी ऐसे questions है, we should write the first line of the question. That's the correct way to represent.
डायरेक्टली पॉइंट्स पर आ जाएंगे, दैट विल नॉट बी अ मच प्रेजेंटेबल आंसर. क्लियर? और इस तरह पॉइंट्स में अपन प्रॉपरली लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर के लिए भी इजी रहे एंड हमारी नॉलेज भी उसमें अपीयर. क्लियर? Now we'll move on to the next, fifth most important question. Give example of two STDs. STD sexually transmitted diseases इसका बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Clear? Sexually transmitted diseases, contraceptive methods. These are a few methods, a few topics जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So अगर अपन को पूछा जाए दो एग्जांपल्स करने से तो 4 डिजीजेस हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, जेनाइटल वॉर्ट्स. पर जब भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पूछा जाए तो हमें एड्स भी जरूर लिखना चाहिए. वैसे तो एड्स हमें याद भी रहता है, राइट? सो the two sexually transmitted diseases are, ऐसे करके अपन को लिखना है, the two sexually transmitted diseases are, दो sexually transmitted diseases क्या होते हैं? यानी कि दो STDs. The first one, let's write down, gonorrhea. Gonorrhea, ऐसे करके अपन लिखेंगे first one, gonorrhea. It is caused by Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae is caused by Neisseria gonorrhoeae. It is a bacterial disease. It's a bacterial disease. Two examples are asked. Symptoms are, symptoms क्या होता है इसमें? Few symptoms were right, just swelling in genitalia, then discharge. Swelling in genitalia, plus discharge, etc. Next, second, which we are going to write is AIDS. AIDS, full form, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. It's caused by human immunodeficiency virus. How is it caused by? It's caused by human immunodeficiency virus. It is a viral disease. ये कैसी disease है? Viral disease. You have to just write about it. And a few symptoms we can write. Symptoms like fever. So these are the three common symptoms. Headache, weakness, weak immune system. All these things are a few things that occurs in these two diseases. Clear? So it's gonorrhea, it's caused by Neisseria gonorrhoeae, it's a bacterial disease. Symptoms, one or two symptoms were right, same goes for AIDS as well. So if this type of question are give two examples of STDs. If it's a 2-mark question, just simply write the name, gonorrhea and AIDS. But if it's a 3-mark question, then little bit we need to describe these two diseases, the way it is. यानी कि ये causative agent का नाम अपन लिख देंगे, उसके अलावा अपन कुछ इसके symptoms लिख देंगे. Clear? Even we can write the treatments like Neisseria gonorrhoeae. इसका treatment क्या है? इसका treatment like antibiotic. Similarly, for AIDS also, since there is no treatment for AIDS, but to reduce the symptoms, antiretroviral drugs could be taken.
सो ये तो बात हो गई है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की. इसके अलावा और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस will be given in the description of this video. Do refer to those questions as well. Thank you, students.